Hello students, so we are going to start our next lecture, and in this lecture we will discuss about some more concepts. So let's just start with the first concept, that is the dual aspects concept. According to this concept, the every business transaction is recorded as having a dual aspects, means as having the two effects to affect at least on two accounts, means every transaction affects at least the two accounts. If you are recording the transaction in the books of accounts, then it will affect two accounts in one go. If one account is credited, अगर एक account credit होगा तो दूसरा account क्या होगा, debit होगा. If one account is credited and the second one is debited, this is because of this concept two sided of the balance sheet are always equal. Means ये कंसेप्ट क्या बताता है आपको कि बैलेंस शीट की दोनों ही साइड, वेदर इट इज़ द एसेट और वेदर इट इज़ द लायबिलिटी, दोनों ही साइड आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. फॉर दैट सेंस डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड as having a dual aspect, means it affect two accounts in one go. Here the formula is the assets is equals to liability plus capital. To make it more understand to you guys, I'm taking the example. For example, if you are purchasing goods, or one we can say कि machinery for rupees 2 lakh on credit मतलब उधार. If you are purchasing machinery of rupees 2 lakh on credit, means machinery is your asset. हमने अपने जो बेसिक टर्म्स थी उनमें पढ़ा था कि एसेट्स जो है कि जो हमारी बेनिफिट देती हैं हमें हमारे बिजनेस के अंदर, वो सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, जो हमारे पास पड़ी हैं, जो आने वाले टाइम में हमें बेनिफिट देगी या टर्म मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी. एसेट्स, तो मशीनरी हमारी क्या है, एसेट है, विच इज़ ऑफ रुपीज़ 2 लाख. तो हमने इसको क्या किया, डेबिट साइड पे एसेट में भी लिखा, एंड ये क्रेडिट के ऊपर परचेज किया है. मीन्स अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पैसा देना पड़ेगा. तो अभी यहाँ पर क्या है, लायबिलिटीज़ में वो आप उनके क्या बन गए हैं, क्रेडिटर बन गए हैं. जिनसे आपने मशीनरी परचेज की है, आप उनके क्या बन रहे हैं, डेटर बन गए हैं, और आपके लिए वो क्या हो गए हैं, क्रेडिटर. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 लाख यहाँ भी मेंशन करेंगे. कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पे. Clear? So here it will affect both the side, whether it is the debit side or whether it is the credit side. Clear? So the next concept is the revenue recognition or the realization concept. Revenue means the account which is added to the capital. Revenue is earned by the sale of goods or by the providing services. Means if you are giving goods to the other person, if you are selling the goods to the other person, or if you are providing the services, then the amount you are earning is your revenue. So the concept of revenue recognition determines the particular period or a time in which the revenue is realized. Means concept of revenue recognition will determine the period, will determine the time in which the revenue is realized. कब आपका वो revenue आपने earn किया है, revenue recognition वो चीज़ को क्या करता है, determine करता है. For example, if the firm get order for the goods on 1st January को फर्म को एक ऑर्डर मिला कि उनको क्या करनी है, गुड्स देनी है, एंड सप्लाई द गुड्स ऑन 20th January, एंड दे सप्लाई द गुड्स ऑन 20th January and received cash on 1st April, and they receive the cash on 1st April. So the revenue will be deemed to have been earned on the 20th January, because on 20th January you supply the goods to the consumer. Means the date when you gave your goods to the consumer, the date when you sell your goods to the consumer, that date is the date when you earn the revenue, and that date will be transferred to the books of accounts. Clear? You will only mention that date on which you are going to transfer your goods. That is your revenue earning date. Let's suppose if the consumer gave you the extra money or gave you the advance money, or he or she will purchase the goods afterwards.
तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका रिवेन्यू के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा. मीन्स इफ ही गेव यू द मनी ऑन 1st January एंड यू सप्लाई द गुड्स ऑन 20th January, देन 20th January इज द ओनली गुड, इज ओनली द डेट ऑन विच यू earn the revenue. You will not record the 1st January as you receive the cash, बिकॉज वो कभी भी, वो 1st January से लेकर 19 January तक वो कभी भी अपना पैसा वापस मांग सकता है कि भाई मुझे पैसा वापस दो, मुझे कोई गुड्स नहीं चाहिए. तो जब आप अपनी गुड्स को क्या कर देंगे, कंज्यूमर को दे देंगे, तब उसकी क्या हो जाएगी, एक लीगली क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड हो जाएगा कि आपने उसको गुड्स दी और उसने आपको पैसे दे चुका था. तो मतलब यहाँ पर वो लीगली बाउंडेड हो जाएगा ऑन 20th January दैट ही रिसीव द गुड्स एंड यू रिसीव द पेमेंट. क्लियर? ऑन दैट डे यू अर्न द रेवेन्यू. सो दिस इज द रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन concept or the revenue realization concept. The next concept is the matching concept. This concept is very important for the correct determination of the net profit. Means if you want to determine the net profit of your business, then you have to follow the matching concept. Here I gave the example here. So means you purchase the 10 books of rupees 100 at the rate of rupees 100. मीन्स इसका टोटल प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज़. एंड यू सेल 5 बुक्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 150. इट मीन्स यू अर्न द रेवेन्यू दैट इज ऑफ रुपीज़ 750. तो मैचिंग कंसेप्ट टेल यू अबाउट दैट हाउ मच रेवेन्यू यू अर्न, एंड व्हेन यू गोट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यू अर्न, देन यू हैव टू चेक द cost you incurred to earn that revenue, and then you will deduct that cost from the revenue to get the net profit. Okay, so here the example is, आपने जब वो 5 बुक्स खरीदी थी, उसकी वैल्यू जो बनती थी वो कितनी बनती थी, 500 बनती थी. मीन्स इफ यू आर सेलिंग द 5 बुक्स, सो यू परचेज्ड दीज 5 बुक्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100. मीन्स इसका जो टोटल अमाउंट बनता है वो 500 बनता है, बट यू अर्नड 750 फ्रॉम द सेल. इट मीन्स इफ यू डिडक्ट 500 from 750, then you will get the 250 as profit. So this is your net profit. Means to determine the net profit of the business, matching, then you have to follow the matching concept. Means the cost incurred on 5 books is rupees 500 and the revenue earned is 750. So the profit will be 250. So this is the matching concept. Clear? The next one is the objectivity concept. Objectivity concept क्या बोलता है? This concept requires that the accounting transaction should be recorded in the objective manners. Means if you are recording the transaction in the book of account, then you collect the evidence for that transactions. It is possible only if you have the evidence to cross check or verify your transactions. So if you have the voucher or the paying slips that you gave your customer or that person gave to you as the voucher and the paying slip, if that voucher and paying slip is with you, then it will work as an evidence to cross check your transactions, which term as the evidence for the company and to cross verify the transactions. So this is the objectivity concept. Means if you are going to record the transaction in the book of account, then you have to collect all the documents, collect all the evidence related to such transactions. Clear? So this is the concepts. Now in the next lecture we'll discuss about the conventions of the accounting principle. Thank you so much.